Hello everyone, welcome back to Tech Study with Lalit. In today's video, we are going to understand what is REST API and how REST API works. Let's understand first how REST API works. REST works using a client-server model. Example, client is maybe your browser, mobile app, or your automation script. Browser may be your Chrome browser, Mozilla Firefox browser, Safari browser, or Microsoft Edge browser. Mobile app may be your Facebook app, your Flipkart app, your Amazon app, or Zomato app, etc. Your automation script may be in your any of the language like Java, Python, C Sharp, Ruby, etc. Server, basically your backend server or your web server. How it works? The client sends an HTTP request to the server and the server responds with data usually in JSON format. Example, get/users/101. Here get is your HTTP method and /users is your URI. Basically URI is your universal resource identifier and 101 is your user ID. And the server responds with the JSON formatted data like ID 101, name John, and role QA engineer. Basically, if you want to fetch any of the order details, then you can use get/orders/123, that is your order ID, and you will get the order details in a JSON format. Likewise, you can get the product details by using product URI. Let's say get/products/product ID, and you will get the product details in JSON formatted data. Likewise, if you want to add a new user, you want to create a new user into the system, then you can use post request and you can provide the payload details, okay, or request body. That's how it works. And if you want to add any of the products into your e-commerce site, then you can use post, or you want to update any of the existing product, then you can use put call to update the product details. Likewise, if you want to delete any of the records or any of the data, then you can use delete request, delete HTTP method. Let's suppose I want to cancel an order, then you can use delete/order/order ID. That's how it works. Basically, you see each request is independent, meaning the server does not store client data, client state or data. Basically, I can explain you with a simple example. Friends, if you have ever visited a cash ATM machine where you have to withdraw, cash from ATM machine, then you have to do each and every transaction separately. So the previous transaction did not store any of the data. Okay, basically what happens, you do a transaction first time and withdraw amount, and then again next time you have to follow the all the steps, then again you withdraw the amount. There is no storage of the data from the previous session or transaction. That's how it works. Let's understand more with the real time example. Okay, so basically what happens, आपके पास में एक मोबाइल फ़ोन है और मोबाइल फ़ोन में आपने कभी ना कभी तो जोमेटो से और या फिर स्विगी से ऑर्डर प्लेस किया होगा फूड आइटम का, राइट। तो जैसे आपने जोमेटो ओपन किया और वहाँ पर आपने सिटी सेलेक्ट किया, सिटी सेलेक्ट करने के बाद आपको वहाँ पर रेस्टोरेंट्स की लिस्ट आ गई, ठीक है। अगर कोई रेस्टोरेंट ओपन है तो वो आ गया और क्लोज है तो वो आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो डेटा है वो इस ऐप में वो डायनेमिक है। ये हुई एक बात, ठीक है। जो डेटा है वो रियल टाइम है और डायनेमिक है और वो कीप चेंजिंग है, रिफ्रेशिंग है। और ये सारा जो डेटा का जो लेखा जोखा है वो कौन रखता है, वो सर्वर रखता है, दैट इज़ कॉल्ड वेब सर्वर। ओके, यहाँ पर सारे रेस्टोरेंट्स का जो डेटा है, जो जोमेटो पे जितने भी रेस्टोरेंट हैं
ओपन है, उनका सबका डेटा यहाँ पर अवेलेबल है वेब सर्वर में। होता क्या है, आपको भूख लगी और आपने कोई फूड आइटम देखा। लेट सपोज कि मैंने एक फूड आइटम देखा, मुझे भूख लगी और मैंने बर्गर ऑर्डर करना चाहा। तो बर्गर के लिए मैंने यहाँ पर सर्च किया तो यहाँ पर एक सर्च करने के बाद सेलेक्ट किया तो यहाँ पर एक रिक्वेस्ट गई पर्टिकुलर रेस्टोरेंट और सिटी के रिगार्डिंग, कि भाई पर्टिकुलर सिटी में पर्टिकुलर रेस्टोरेंट के लिए ये जो बर्गर है ये अवेलेबल है या नहीं है। तो यहाँ पर एक रिक्वेस्ट गई और सर्वर ने उसका रिस्पॉन्स किया, और रिस्पॉन्स में उसने बोला कि हाँ ये बर्गर अवेलेबल है। तो ये इसने रिस्पॉन्स किया। इट्स लुक सिंपल राइट, बट सिंपल तो ये दिखने में सिंपल है, बट ये सिंपल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो रिस्पॉन्स आया है वो एक HTML वेब पेज के रूप में आया है। HTML वेब पेज के रूप में आया है, बट आई नीड डेटा राइट। ये इसने क्या दिया मुझे? HTML वेब पेज। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये मतलब मुझे यहाँ पर क्या चाहिए था? मुझे यहाँ पर चाहिए था स्ट्रक्चर डेटा। मुझे यहाँ पर स्ट्रक्चर डेटा चाहिए था जो कि मुझे ये बता सके कि ये यहाँ पर पर्टिकुलर फूड आइटम अवेलेबल है या नहीं है। ठीक है तो मैं उसको ऑर्डर प्लेस करूँगा और मैं वहाँ पर अपनी डिलीवरी ले लूँगा। तो ये स्ट्रक्चर डेटा के थ्रू मुझे पता चलेगा। तो स्ट्रक्चर डेटा यहाँ पर सर्वर हमें देगा, तो वो किस रूप में देगा? वो या तो JSON के रूप में देगा या फिर उसे XML के रूप में देगा। तो JSON क्या होता है? जहाँ पे ऑब्जेक्ट वैल्यू रहता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट और वैल्यू रहेगा। और XML कैसा रहेगा? वो हिरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर रहेगा। ठीक है, यहाँ पे हिरार्की फॉलो होगी। अब ये बात हुई हमारी JSON और XML की, बट यहाँ पर हम ये समझते हैं कि यहाँ पर एक इशू ये आता है निकल के कि हमने एक आइटम के लिए किया था तो हम वहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है आइटम का जो डिटेल्स है फैच कर लेंगे, ईजिली उसको मैनेज कर लेंगे। बट यहाँ पर अगर मल्टीपल कॉल्स हैं, मल्टीपल डेटा है, तो मल्टीपल डेटा के केस में मल्टीपल कॉल्स होंगे, मल्टीपल मेथड्स कॉल होंगे, और उन मेथड से जो रिक्वायर्ड मतलब जो डेटा है हमें फैच करने में वो डिफ़िकल्टी रहेगी। तो जो सिस्टम है हमारा यहाँ पर वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा काफ़ी। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए यहाँ पर क्या आता है? रेस्ट आता है पिक्चर में। रेस्ट API क्या करता है? रेस्ट API यहाँ पर हमें एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके देता है, स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट। और ये स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट में क्या होता है? पहले से ही यहाँ पर एक रेस्टोरेंट करके होगा, यहाँ पे सिटी होगा, और यहाँ पर एक फूड आइटम करके यहाँ पर होगा। एक ऑब्जेक्ट में मतलब हमारे कीज होंगे। तो इस स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट को एक स्टैंडर्ड इनपुट की तरह ट्रीट किया जाएगा वेब सर्वर के द्वारा। जब वेब सर्वर इसमें उस पर्टिकुलर डेटा के रिगार्डिंग यहाँ पर जो डेटा को पॉपुलेट करेगा, जैसे पर्टिकुलर रेस्टोरेंट है तो XYZ, पर्टिकुलर सिटी ये मान लो जयपुर है, और फूड आइटम लाइक बर्गर है, चाउमीन है, या फिर समोसा है, एनी ऑफ द आइटम्स विल बी all the values will be populated by the server as a response। और ये ट्रांसफ़र और ये जो है स्टेट ट्रांसफ़र हो जाएगी किसको? जोमेटो को। That's why we are saying it as representational state transfer। REST is nothing but a representational state transfer, means values will be transferred to the client, that is your Zomato. Let's understand more deeply here. In simple words, REST is an architectural style used to build APIs that allow systems to communicate with each other over HTTP. REST is not a tool or a protocol, it is a set of guidelines for designing APIs that are simple, scalable, easy to maintain, and most modern applications like banking apps, e-commerce apps, and mobile apps, we can use REST APIs. That's it for this video. That's how REST API it is and how it works. I explained here. If you found this video helpful, please hit a like button. Please subscribe my channel for more videos and stay tuned for any of the updates. Till then, bye. Thank you.